Hey, good evening and welcome to the favorite time of mine जहाँ पर रोज मिलते हैं मैं और आप to discuss our topics of forensic medicine और हमारा goal जो है that is to prepare each and every student who is watching this lecture for cracking his or her NEET PG entrance examination. Yes. That is the common goal that I share with you, and with that goal in my mind, I come to you every evening at 7 p.m. taking a new lecture or an MCQ session in the subject of forensic medicine, and this interface to us is provided by none other than NEET PG provider Unacademy. ओके सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. Okay, so time and again I keep telling you that if you look at question formation, the MCQ formations in NEET PG examinations, so हमारे सब्जेक्ट से तकरीबन 10 questions आते हैं, out of which we are expecting about 3 to 4 questions from the section of forensic pathology, something to do with autopsy, something to do with pathological finding in dead, and infanticide is one of the important topic in that area. ठीक है, so आज हम बात करेंगे infanticide की. What does it feel all about doing an autopsy on an infant body and the theories connected with it. ठीक है, so before we begin on to that journey of ours, that wonderful journey which lies ahead, I would like to share my little introduction to all those students who are watching this live, plus those who will be watching this video later on. My name is Dr. Sumit Tellewar. I am an MD in forensic medicine. I graduated from Delhi University throughout, and जब से मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ तब से मेरा इंटरेस्ट है टीचिंग में, और तकरीबन पिछले 17 सालों से मैं टीचिंग से एसोसिएटेड हूँ. इस जर्नी के दौरान आई हैव बीन प्रिविलेज्ड टू हैव माइग्रेटेड थ्रू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने एक मेडिकल स्टूडेंट को अपनी ड्रीम पीजी अचीव करने में मदद करी है, और आई फील ग्रेटफुल दैट मेरा उसमें कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा योगदान रहा है. ठीक है, दिस इज़ समथिंग दैट आई लव स्टिल, एंड दैट इज़ वाई टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस अबाउट द सब्जेक्ट विद यू ऑल. आज के अपने फोरेंसिक के टॉक को लेकर के या फिर पिछले किसी भी टॉक के लिए अगर आप मुझसे कोई भी सवाल करना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, इफ़ यू हैव बीन रीडिंग द मैटर व्हाट वी हैव बीन टॉकिंग टुगेदर ऑन दिस forum for approximately last 1 month or so, then this is the link. So you can catch me at Telegram app, and once you have downloaded Telegram app in your phone, just need to follow the link livedaily.me/neetpg, or you can be connected with me. वहाँ पर आप मुझे पास आ जाएंगे, जहाँ पर उस टेलीग्राम ऐप पे हम और आप अपनी क्वेरीज सॉल्व कर सकते हैं. सो आई एम इनवाइटिंग यू टू कम ऑन दैट टेलीग्राम ऐप एंड स्टार्ट सेंडिंग योर क्वेरीज टू मी. नाउ उस टेलीग्राम ऐप पे आप क्यों आना चाहोगे? बिकॉज आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो नीट पीजी 2021 या फिर नीट पीजी 2022 के लिए अभी, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को एक ऐसे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम में डालो जो आपको नीट पीजी के लिए एब्सोल्युटली प्रिपेयर करे, नॉट इन वन सब्जेक्ट बट इन ऑल द 19 सब्जेक्ट्स दैट वी हैव इन MBBS करिकुलम. और वो प्रोग्राम है अनअकैडमी नीट पीजी का सब्सक्रिप्शन, जहां आपको मिलती है लाइव क्लासेस, जहां आपको मिलते हैं इंटरैक्टिव क्लासेस विद योर एजुकेटर, जहां आपको मिलती हैं लाइव पोल्स, जहां
आप अपने एजुकेटर के साथ एमसीक्यू सॉल्व करते हो, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है जो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गिव्स यू एन इनफ कॉन्फिडेंस कि जब आप एग्जामिनेशन में बैठो you have that an extra edge that no other student has. Okay, टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस, ताकि आपकी रिपीटेड प्रैक्टिस हो सके, हर सब्जेक्ट में आप एक तरीके की महारत हासिल कर पाओ. एंड लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन बी with your educator live on doubt clearing sessions if you have NEET PG Unacademy subscription. ये सब देखने के लिए आपके पास है स्पेशल क्लासेस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी आई वुड से क्रिटिकल. आप स्पेशल क्लास ज़रूर 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 देखो. स्पेशल क्लासेस आर अवेलेबल ऑन NEET on Unacademy platform absolutely free. These special classes are designed by a variety of wonderful teachers on the exact platform जिस तरीके से आपकी NEET PG की प्रिपरेशन होती है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में. एक बार ही आप स्पेशल क्लासेस देखोगे, यू वुड कंप्लीटली हैव एन आइडिया कि आपका क्लासरूम कैसे लगने वाला है. वंस यू हैव बीन थ्रू दी स्पेशल क्लास, यू वुड नॉट वांट टू जॉइन एनी अदर वेब बेस्ड एप्लीकेशन अपार्ट फ्रॉम अनअकैडमी अपनी NEET PG सब्सक्रिप्शन के लिए. और सब्सक्रिप्शन उसके बाद आपको लेना है 12 मंथ्स, 24 मंथ्स. बाय द वे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको स्पेशल क्लास देख के ही सब्सक्रिप्शन लेना है. बट इफ़ यू डू वॉच स्पेशल क्लासेस, यू वुड नॉट वांट टू टेक एनी अदर सब्सक्रिप्शन. ओके, गियर योरसेल्फ अप, फटाफट से ये सब्सक्रिप्शन ले डालिए. ये सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है 12 या 24 महीने का आपकी कॉन्टिन्यूड प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के लिए. ये सब्सक्रिप्शन लेते समय मेरा कोड यूज करना मत भूलिएगा, बिकॉज ये रेफरल कोड विच इज डॉक्टर सुमित लाइव इज गोइंग टू गेट यू 10% डिस्काउंट ऑन योर पेमेंट. और आपको पेमेंट करनी है 36,000 फॉर 24 months and 24,750 for a 12-month subscription. Yes, this is the amount that you need to pay for ensuring your chances in a NEET PG entrance examination. Okay, पेमेंट के ऑप्शंस आपके सामने मौजूद हैं. इजी पेमेंट ऑप्शंस हैं, सो दैट whatever is comfortable for you वो आप चूज कर सकते हैं. ठीक है, चलिए जी, आज का अपना टॉपिक शुरू करेंगे. जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आज का टॉपिक है हमारा इन्फेंटिसाइड. इन्फेंटिसाइड मीन्स killing of an infant. Infant is somebody who is after birth but within the first year of his life. यानी कि लाइव बर्थ के बाद एक बच्चा जब तक 1 साल का नहीं होता उसको हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं इन्फेंट. एंड इन्फेंटिसाइड मीन्स किलिंग ऑफ एन इन्फेंट. सो सबसे पहली स्लाइड में ही हम लोग देखेंगे कि ये टॉपिक मेडिको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्या है, क्यों है. ओके, बट उससे पहले लेट्स वेलकम ऑल दोज हु हैव ऑलरेडी जॉइंड अस. सो सम ऑफ आवर कॉमन stooges are already there. Sampa is here, Vishwas is there, and Sushmita has just joined in. Welcome all three of you, and I guess Dan should be following us pretty soon. Okay, so let's begin by taking up our first slide in infanticide, where we talk about what is the difference or what is the unusual importance of infant autopsy. ठीक है, क्योंकि हम लोग मेडिको लीगल वर्ल्ड के हैं, तो जब भी हम लोग बात करते हैं किसी टॉपिक को लेकर के, तो हमारा पूरा जो फोकस है वो उस टॉपिक का मेडिको लीगल एंगल होता है. अगर हम इन्फेंट डेथ्स की बात करना चाहें तो इन्फेंट डेथ्स तो पीडियाट्रिक्स में भी पढ़ाई जाएंगी, दैट व्हाट आर दी पैथोलॉजिकल, व्हाट आर दी अदर जेनेटिक रीजंस ऑफ इन्फेंट डेथ. बट व्हेन वी टॉक अबाउट इन्फेंटिसाइड और इन्फेंट डेथ्स इन फोरेंसिक, we talk about the medico-legal aspects of those deaths. Okay, so to understand the whole concept, आज के टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए
I would request you to understand these two lines first of all. Okay, I want you to read the two lines written below. Consider two autopsies. Okay, so think you are standing in an autopsy room. आप एक autopsy room में खड़े हैं जहां पर दो डिसेक्शन टेबल हैं आपके साइड बाय साइड. एक डिसेक्शन टेबल पे देर इज अ बॉडी ऑफ अ बॉय ऑफ 3 years ऑफ एज. ठीक है, कॉज ऑफ डेथ कुछ भी रहा हो, अभी हम ये कह रहे हैं देर इज अ बॉडी ऑफ अ बॉय हु इज 3 years ऑफ एज, एंड ऑन द अदर टेबल देर इज अ बॉडी of an infant, okay, or an infant looking boy or a girl. Now when you are beginning your autopsy on the body of a boy जो कि 3 साल का है, आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आएगा, what is the question, that whether this boy was alive before he died. The question is whether this boy was alive before he died. Now this looks like a very stupid question, but this is the question which is going to make the complete difference in understanding today's topic. और वो सवाल आपके दिमाग में क्यों नहीं आएगा? बिकॉज अगर वो लाइव पैदा नहीं हुआ था तो इतना बड़ा हुआ कैसे? क्योंकि 3 साल का बच्चा एक बड़ा बच्चा होता है. यू कैन जस्ट बाय लुकिंग एट हिज बॉडी मेक आउट दैट ही वॉज born alive and then lived few years before unfortunately dying. Okay, but when you turn your attention to the second body, which is an infant looking body, this question shall pop up in your mind, whether this fetus was born alive or it was a dead born fetus. Because if that infant looking body was born alive and lived for few days, let's say he was born alive and lived for 5 days. On the other hand, if it would be a dead born fetus with a term pregnancy, दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर सेम दिखने वाला है. ठीक है, मैंने अभी क्या कहा, कंसिडर कीजिए एक टर्म प्रेगनेंसी है जिसमें 40 वीक्स पे एक गलती से इंट्रा यूट्राइन डेथ हो गई, उसके बाद उस फीटस को डिलीवर किया गया. ऑन दी अदर हैंड एक फीटस है जो 40 वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ के बाद में लाइव डिलीवर किया गया और 5 दिन के बाद में फॉर सम रीज़न उसकी डेथ हो गई. दोनों की जब आप बॉडी को देखोगे तो वो एक जैसी दिखेंगी. यू विल नॉट बी एबल टू टेल विच वन वॉज बॉर्न अलाइव or born dead just by the appearance of the body. Okay, and there pops a question, was this child born alive? And that is the crux of today's talk. Today we are going to differentiate that when we have an infant body for autopsy, how do we look for signs to say whether it was a live birth or it was a dead birth. ठीक है, एंड इसीलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, that the first job or the first goal or the first objective in an infant autopsy is not to find the cause of death but is to establish whether it was a live birth or it is a dead born fetus. ठीक है, जब हम अडल्ट ऑटोप्सीज करते हैं, जब हम ग्रोन अप लोगों की ऑटोप्सीज करते हैं, तो हम ये एस्टैब्लिश नहीं करना चाहते वेदर इट वाज अ लाइव बर्थ और नॉट. वो तो अंडरस्टूड है कि वो लाइव बर्थ ही था, बिकॉज अदरवाइज वो डेवलप कैसे हुए इतने. ठीक है, तो वहां पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है ऑटोप्सीज में इज वेरी सिंपल, टू फाइंड द कॉज ऑफ डेथ. बट इन ऑटोप्सीज इन इन्फेंट लुकिंग बॉडीज primarily we have to establish whether it was a live birth or it was a dead born fetus. If it was a live birth, then we may have to look for signs of death or cause of death.
बट इफ इट वॉज अ डेड बॉर्न फीटस ओनली, तो उसको मारा थोड़ी जा सकता है, इट वॉज ऑलरेडी अ डेड बॉर्न फीटस, देन वी डोंट हैव टू लुक फॉर कॉज ऑफ डेथ. ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है, इट इज ऑल अबाउट हाउ टू डिफरेंशिएट आफ्टर डेथ बिटवीन ए लाइव बॉर्न बॉडी और अ डेड बॉर्न बॉडी ऑफ अ फीटस. उसके लिए लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज लाइव बर्थ. Live birth is a fetus showing signs of life after coming out of maternal uterus. Okay, and what is a dead born fetus? A fetus dying inside the maternal uterus, a condition which is commonly called as intrauterine death, जो आप gynecology and obstetrics में भी पढ़ते हो, not gynecology but obstetrics. Okay, so it's a case of an intrauterine death. He may have died of whatever reason, and subsequently the expulsion takes place, because even if the fetus has died inside the uterus, you need to expel the fetus out, and when you will expel the fetus out, it will come out of the maternal uterus as a dead born fetus. Okay, and if this fetus is thrown somewhere or is buried somewhere, and that dead body is recovered and brought for autopsy to rule out if there has been a crime that might have been committed, then the job of the doctor who is conducting the autopsy, first of all, is to establish whether it was a live birth or not. ठीक है, so let's see how do we differentiate between the two. Okay, so keep being with me, because अगर आपको चैप्टर का क्रक्स समझ में नहीं आया, then you will keep arguing within your head कि ये बात क्या हो रही है, हमने तो infanticide पे बात करनी थी. The whole idea in infanticide is when we have an infant body for autopsy, उस समय establish करना पोस्टमार्टम के साइन को देखते हुए कि क्या ये लाइव बर्थ है या फिर ये लाइव बर्थ नहीं है. ठीक है, ओके, सो व्हाट आर द साइंस ऑफ डेड बर्थ. हम डेड बॉर्न फीटस में ऐसा क्या देख सकते हैं so that we can comment that it could be a dead born fetus. So there are few radiological signs. Okay, two very very important radiological signs are Spalding sign and Robert sign. Okay, Spalding sign and Robert sign. What exactly is Spalding sign? Spalding sign is overriding of skull bones on skull sutures. यानी कि जो स्कल की डिफरेंट बोन्स हैं वो सूचर्स पे आपस में कनेक्टेड होती हैं, वो सूचर्स पे आपस में जुड़ती हैं. इन केसेस ऑफ इंट्रायूट्राइन डेथ, वन बोन स्टार्ट्स टू कम on top of the other. There is overriding of the skull bones on each other. This sign, which can be demonstrated radiologically, is called as Spalding sign. Spalding sign generally present itself about 3 days post intrauterine death. Okay, the range is about 2 to 3 days. So तकरीबन 2 से 3 दिन के बाद Spalding sign appreciate होना चालू हो जाएगा in cases of an intrauterine death. And what about Robert sign? Robert sign is presence of gaseous shadows in vessels of the heart, particularly aorta. Okay, and this radiological sign which shows presence of gaseous shadows in vessels may be seen as early as 12 hours post intrauterine death. So Robert sign जो है वो radiologically जल्दी दिखता है. That's what I'm saying. And then how about naked eye finding? Because you know what, जब हमको एक infant की body मिलेगी for conducting an autopsy, it has to be an infant body
which has been abandoned. It might have been, हमें नहीं मालूम whether it was live birth or a dead born fetus. But then, if we do recover a body, it probably would be an abandoned body which may have been abandoned in, dustbin or any roadside जिसको फेंक दिया गया हो. तभी तो पुलिस रिकवर करके लाएगी कि बॉडी रिकवर हुई है. देखना चाहते हैं कि कोई क्राइम तो नहीं हुआ है, किसी ने मार तो नहीं दिया है इन्फेंट को. ओके, नाउ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम some amount of decomposition definitely would have happened in that infant body, and radiologically वो सारी चीज़ें देख पाना जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, it's not that simple. Okay, because decomposition has its own effect on the dead body which can bring about lots of artifacts in postmortem time period. That is why we have to see certain signs which can be looked by naked eye also. So at the time of autopsy हमें तो naked eye से सब कुछ दिख ही जाता है. The most important naked eye sign that is seen in dead births is a sign called as maceration. This sign is so important in dead born fetuses that if we say that a fetus is macerated, यानी कि अगर हम ये कहें कि macerated fetus है, उसका मतलब ये है कि ये dead birth है. ओके, अगर maceration नहीं होगी तो हमें mummification भी मिल सकती है. So let's see कि ये maceration क्या होती है और ममिफिकेशन कैसे मिल सकती है इन केसेस ऑफ डेड बॉर्न फीटस विच इज इक्वल टू इंट्रायूट्राइन डेथ. ओके, सो लेट्स सी कि मैसरेशन और ममिफिकेशन कैसे डेवलप होती है इन फीटसेस में. ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली इज मैसरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं. मैसरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एसेप्टिक ऑटोलिसिस in the dead fetus which is surrounded by liquor amni in the uterus of the mother. याद है आपको हमने बहुत पहले when we were doing our lecture about postmortem changes, we talked about postmortem decomposition of the body. When the body is dead, the body is bound to decompose, and at that point of time we were talking about a concept called as putrefaction. And we saw that putrefaction basically is postmortem decomposition, which is a combination of two factors. One is bacterial decomposition of the body organs, and two, autolysis of dead body cells. Correct? Now, what are we seeing in cases of an intrauterine death? The fetus is dead inside the maternal utero. This fetus is surrounded by liquor amni. Okay, the inside environment of the maternal uterus is an aseptic environment, correct, provided that the membranes are intact till the time. So in that aseptic environment, the cells of the dead body of the fetus, they start to autolyze because they are dead cells now, and the changes thus which comes into his body, because his body is surrounded in liquor amni and the cells are autolyzing, is called as maceration. Which means जितनी भी इंट्रायूट्राइन डेथ होंगी उनमें मैसेरेशन होगा. ठीक है, कितना मैसेरेशन होगा, क्योंकि मैसेरेशन इज नॉट अ वन टाइम फिनोमेना कि इंट्रायूट्राइन डेथ हुई और 4 घंटे में मैसरेशन हो गया और जितना हो गया 4 घंटे में उतना ही रहेगा. अब चाहे आप डिलीवरी 4 घंटे के बाद कंडक्ट कराओ उस इंट्रायूट्राइन डेथ की, और यू कंडक्ट द डिलीवरी आफ्टर 4 days और 7 weeks. नो, द लॉन्गर द बॉडी इज गोइंग टू बी इन द यूट्रस, द मोर प्रिडोमिनेंट चेंजेस आर गोइंग टू कम. ओके, सो व्हाट आर द चेंजेस
which can identify that it's a macerated body. The earliest sign of the maceration is slippage of skin, which is seen in about 12 hours. Okay, the earliest sign is slippage of skin, which is seen in about 12 hours. This is a very, very important MCQ question which has been asked over and over and time and again in examination कि मैसेरेशन का सबसे अर्ली साइन क्या होता है डेड बॉर्न फीटस को अगर हम देखें तो वो होता है स्लिपेज ऑफ स्किन, जो कि इंट्रायूट्राइन डेथ के 12 घंटे के अंदर मिलना चालू हो जाएगा. विच मीन्स इफ अ फीटस हैज डाइड इनसाइड द यूट्रो एंड द फीटस हैज बीन डेड फॉर एटलीस्ट 12 hours and after that that fetus is evacuated out of the maternal uterus, we may be able to see slippage of skin, which is the earliest sign of maceration. That's what it means. Okay, apart from this, if the fetus tends to be inside that liquor MNI filled uterus for more and more time, which normally most of the fetus does, क्योंकि कई बारी तो इंट्रायूट्राइन डेथ की खबर कई दिनों तक नहीं होती लोगों को. Okay, the body of the fetus becomes swollen. It is soft, red in appearance, लाल हो जाती है, because when the slippage of the skin is going to be there, the underneath raw area, because if the skin slips off, the underneath raw area is going to be visible, and with the swelling and the reddening, the fetus looks like what is called as an angry looking fetus. जब गुस्सा आता है तो कैसे गुस्से में लाल हो जाता है ना चेहरा, है ना, हम यही वाली बात करें. द फीटल बॉडी इज स्वोलन, द स्किन स्लिपेज इज देयर, द बॉडी इज ऑल्दो सॉफ्ट, द अपीयरेंस इज कॉल्ड एज एन रेड एंग्री लुकिंग फीटस. ओके, अगर और भी समय रहेगा थोड़ा सा और डिलीवरी से पहले फीटस, the skin later on becomes purple, having blebs containing serosanguinous fluid. Skin जो है उसमें blebs भी बनेंगे और it will start to contain exudative fluid which is serosanguinous in nature. So इस तरीके की appearance दिखती है उस फीटस की जिसको डेड बर्थ में डिलीवर किया जाता है. कैसा फीटस होगा? लाल, swollen appearance, soft to touch, okay, angry looking appearance जिसको हम बोलते हैं slippage of skin. अगर वो 3-4 दिन रह चुका हो after death, there may be blebs of skin present with containing serosanguinous fluid. So इस condition को जब आप देखोगे उसको देख के ही आप बता पाओगे कि ये तो macerated area लग रहा है, ये तो macerated fetus लग रहा है, which is equal to a dead born fetus. Okay, now अगर मैसेरेशन होता है फीटस में इन केसेस ऑफ इंट्रायूट्राइन डेथ, तो मम्मीफिकेशन कैसे हो सकता है? ओके, बिकॉज मम्मीफिकेशन हमने पोस्टमार्टम चेंजेस में बात करी थी दैट मम्मीफिकेशन होने के लिए कुछ स्पेसिफिक फीचर्स चाहिए होते हैं. सो लेट्स सी मम्मीफिकेशन के लिए क्या चीज़ लिखी हुई है, दैट फीटल डेथ ड्यू टू डेफिशिएंट ब्लड सप्लाई. अगर ऐसा है कि फीटल डेथ जो है वो डेफिशिएंट ब्लड सप्लाई के कारण हुआ है, द लिकर इन दीज कंडीशंस आर इज ऑल्सो स्कैंटी. ओके, हो सकता है लिकर एमनाई का फॉर्मेशन भी कम हुआ है. सो द फीटस विच हैज डाइड इनसाइड द यूट्रस हैज हैड अ डेफिशिएंट ब्लड सप्लाई बिकॉज ऑफ विच द लिकर फॉर्मेशन इज नॉट वेरी मच गुड. ओके, हाइड्रोमनियोस का केस है जिसमें लिकर कम बनता है, एंड देर इज नो एंट्री इनटू द यूट्रस बिकॉज मेम्ब्रेन्स आर इंटैक्ट. सो हवा तो अंदर जा भी नहीं रही है. दिस फीटस ड्राइज अप क्विकली एंड हैज अ वेरी श्रिवल्ड अपीयरेंस, एंड दिस काइंड ऑफ एन अपीयरेंस में हैपन इन अबाउट 2 weeks. और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था ना दैट इन केसेस ऑफ इंट्रायूट्राइन डेथ कई बारी फीमेल्स को पता भी नहीं होता दैट इंट्रायूट्राइन डेथ हो गई है फॉर फ्यू डेज. इट कुड बी 5 days, 10 days, 12 days, 2 weeks, 3 weeks, कई बारी नहीं पता होता.
So by the time they get to know, the fetus has already been dead for some time. And what if it was due to placental blood insufficiency and it was a case of scanty liquor formation? Thus the fetus who had died about 2 weeks back, it shrivels up quickly, and when that delivery is conducted, the fetus has a mummified appearance. Okay, but ये बहुत ज़्यादा fetus में नहीं होता. Maceration is much more common in cases of intrauterine death subsequently delivered as dead born fetuses. So हमको अपनी तरफ से क्या याद रखना है? Maceration equal to dead born fetus. ठीक है, ग्रेट. आगे चलते हैं. अब हम देखते हैं कि ये तो हम चीज़ें देख सकते हैं डेड बॉर्न फीटस में. सो व्हाट वी कैन सी इन लाइव बर्थ्स. ओके, सो लाइव बर्थ्स में ऐसी क्या चीज़ें हमें देखनी होती हैं, या फिर ऑटोप्सी में ऐसी क्या चीज़ें हमें एस्टैब्लिश करनी होती है जिसको देख के हम बता सकते हैं दैट इट कुड बी अ केस ऑफ लाइव बर्थ. ओके, सो व्हाइल कंडक्टिंग ऑटोप्सी ऑन द बॉडी ऑफ fetuses or infant deaths, I should say, we need to put our attention on 4 important areas जहाँ पर हमें live birth के signs मिल सकते हैं. These 4 important areas are bones, GIT, umbilicus, and most important is lungs, or you can say respiratory apparatus. रेस्पिरेटरी apparatus. सो हमें देखना है बोन्स में भी लाइव बर्थ का साइन मिलता है, जीआईटी में, अम्बलाइकस में, लंग्स में. देयर आर मेनी मोर बट दीज 4 आर कोर. ओके, लेट्स सी हमें बोन्स में और जीआईटी में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी होती हैं. सो व्हाट वी वांट टू सी इन बोन्स इज साइंस ऑफ ऑसिफिकेशन सेंटर, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ossification center. Okay, there are some very important ossification centers जो कि एक particular time of intrauterine life में आते हैं. Okay, their presence tells us that the fetus has crossed that certain stage of intrauterine life. Okay, for example, if we say calcaneum, the ossification center for the calcaneum bone in the foot comes at 5 months of intrauterine life. The ossification center for talus comes at 7 months of intrauterine life. Ossification center for lower end of femur comes at 9 months of intrauterine life, and ossification center for upper end of tibia comes after live birth. So ossification center for upper end of tibia live birth के बाद ही आता है. ठीक है, इन सब ऑसिफिकेशन सेंटर्स का मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस क्या है, एक बार ये भी देखते हैं. मान लीजिए हमारे को एक इन्फेंट लुकिंग बॉडी मिली है एंड हम देखना चाहते हैं कि लाइव बर्थ है या लाइव बर्थ नहीं है. अगर लाइव बर्थ नहीं है तो इसकी इंट्रायूट्राइन एज कितनी है वो भी तो जानना ज़रूरी है ना. सो हमने उसके टिबिया के अपर एंड के ऑसिफिकेशन सेंटर को देखा और उसके लिए डिसेक्शन करना बड़ा सिंपल होता है. जो इन्फेंटाइल बोन्स होती है ना वो कार्टिलेजिनस होती हैं, सो यू कैन कट देम, यू कैन स्लाइस देम with your scalpels also. अभी calcifications नहीं होते. Ossification centers can be seen as a red germinal center in the cancellous portion or pulp of the bone. उसमें दिख जाता है naked eye से. Okay, so what do? We slice the bones. हमने उसमें देखा कि यार हमें तो ना टिबिया का ossification center नहीं दिख रहा, which means probably it's not a live birth. So हमने कहा कि चलो फिर intrauterine life तो हम एस्टिमेट करें कि वेदर इट्स अ टर्म बॉर्न बेबी और कुछ और पुराना है. और हमने फिर देखा ऑसिफिकेशन सेंटर फॉर लोअर एंड ऑफ फीमर
और वो हमको मिल गया, which comes at 9 months we just saw, which means that it's a term fetus. Okay, it's a term fetus, यानी कि लाइव बर्थ तो नहीं है, डेड बॉर्न फीटस है, बट जो उसकी इंट्रायूट्राइन एज थी दैट वाज क्लोज टू 9 मंथ्स, सो विच इज ऑलमोस्ट टर्म. अब हमें ना लोअर एंड ऑफ फीमर का भी नहीं मिला, तो हमने कहा चलो ठीक है टैलस का देखते हैं, और टैलस का ऑसिफिकेशन सेंटर हमको मिल गया विच कम्स एट 7 मंथ्स. ओके, नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एस्टैब्लिशिंग वेदर द फीटस इज pre 7 months or post 7 months of intrauterine life? The idea of establishing is the concept of viability. The concept of viability, which comes at the age of 28 weeks of intrauterine life. Okay, so 7 months is more than or equal to 28 weeks of intrauterine life. So अगर टैलस का सेंटर प्रेजेंट है, इसका मतलब the fetus which has been found, although is dead born, was a viable fetus. Okay, it was post 28 weeks of pregnancy. अब मान लीजिए टैलस का भी नहीं मिला, तो हमने कहा चलो कैल्केनियम का देखते हैं, और हमें कैल्केनियम का मिलता है. कैल्केनियम कम्स एट 5 months of intrauterine life. What is the medical legal significance of 5 months of intrauterine life? 5 months is more than or equal to 20 weeks of gestation, and 20 weeks is the upper limit at which you can terminate the pregnancy under MTP Act. So if the fetus turns out to be more than 20 weeks, which means calcaneum का center present है, then there is a fight between whether it is a medical termination of pregnancy fetus, यानी कि legal termination है, or it may be a case of criminal abortion. Okay, but if calcaneum का center भी present नहीं है, which means that the fetus could be less than 5 weeks of intrauterine life, 5 months, sorry, 20 weeks, which means that it could be a logical and legal MTP scenario. So you understand, ऑटोप्सी करते समय ऑल्दो हमने अभी बात करी थी कि बोन्स से हम ये देख सकते हैं वेदर इट इज़ अ लाइव बर्थ और नॉट, और अगर हमारे को लाइव बर्थ का सेंटर नहीं मिला बोन में, दैट डज नॉट मीन वी सिंपली से दैट इट्स अ डेड बॉर्न फीटस. आपको डेड बॉर्न फीटस की भी इंट्रायूट्राइन एज तो एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, बिकॉज उससे भी क्राइम्स जुड़े हुए हैं, उससे भी मेडिको लीगल सिनारियोज अटैच्ड हैं. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन comment on the intrauterine gestational ages by looking at the ossification centers of the bone. But the most important one is the upper end of tibia, presence of which tells us that it's a live birth. Okay, then we pay our attention towards GIT, and there are two very important things in GIT that we should try and look for them. The first is a definite sign of live birth. Definite means अगर ये है तो live birth ही होगी और कुछ हो ही नहीं सकता. What is that? That is presence of milk in stomach or GIT. Because if it was a live birth, the fetus was fed. The fetus was provided, milk, because that's what fetus consume. They suck. It may be breast milk or maybe an external source of milk depending upon क्या situation थी. But if fetal stomach contains milk, digested or fresh, whatever, it means that fetus was fed, which means it was definitely a live birth. Okay. Another important thing that we can look for in GIT is presence of air in the intestinal loop. Okay, now a test needs to be conducted here which is called as Breslau's second life test. Okay, Breslau's second life test. The result of the tests are not conclusive, so आप इस टेस्ट को conclusively accept नहीं कर सकते.
but they are helpful. Okay, so in theory, what is the idea? That if it is a live birth, okay, and the fetus would have survived after gaining live birth, the child which was delivered, he survived for a while, then there may be, traveling of air in his intestinal loop. So what we want to see is whether air is present in his intestinal loop or not. और उसके लिए हमें क्या करना होता है? We need to ligate a segment of intestine, उसको बांध देना है, and then we need to cut the segment of intestine beyond the ligatures so that we have a piece of intestine available which is tied from both the sides. If any air is present in this intestinal loop, it will cause the intestinal loop to float in a bucket full of water. So हमें इस intestinal loop को एक पानी के bucket में डालना है. If it floats, it contains air. If it sinks, it does not. If it does float, it tells us that there is presence of air in the intestinal loop. If it sinks, it tells us that it does not contain air in the intestinal loop. The test is not conclusive, but it is good theoretical advantage. Apart from this, हमें और भी चीजें देखनी पड़ेंगी to establish live birth. So these are two important things that we do in GIT. Remember, Breslau's second life test is about presence of air in the GIT. Okay, आगे चलते हैं. हम देखते हैं कि हम अम्लाइकस में क्या देखते हैं. हमने कहा था भाई अम्लाइकस भी देखते हैं. अम्लाइकस में क्या देखना होता है? सो अम्लाइकस में क्या देखना होता है उसको समझने से पहले ये सिंपल सी बात देखिए कि व्हेन एक्चुअली अ लाइव बर्थ हैपन्स, जो कि हम सभी की हुई थी, द लाइव बर्थ व्हेन द डिलीवरी इज बीइंग कंडक्टेड, व्हाट हैपेंस इज, एंड इन द लेबर रूम द डिलीवरी सर्जन क्लैम्प्स द कॉर्ड एंड कट्स द कॉर्ड. सो देयर इज अ पीस ऑफ umbilical cord which remains attached to the abdominal umbilical area of the live born child. Correct? Now, as this child grows in his life, यानी कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, जैसे जैसे बच्चा कुछ दिन निकालता है, वो जो umbilical stump attached होता है उसके umbilicus से, वो अलग हो जाता है ना, leaving behind the so called umbilicus in our abdomen. So वो जो physiological changes आते हैं ना umbilicus में, वो ही नोट करने होते हैं. Okay, so consider if a live birth does happen, what are the changes that can be appreciated in the umbilical stump? After 2 hours, if you know or if you recall your anatomy, umbilical cord is a triple vessel structure. उसमें 3 vessels होती हैं उस cord में. ठीक है. So तकरीबन 2 घंटे after delivery, the blood in the remaining stump of the umbilicus is completely clotted. ठीक है. इसको हम कैसे देखेंगे? अगर आप एक मेटालिक प्रोब लोगे और जो umbilical stump लगा हुआ है उस फीटल बॉडी पे जिसकी हमें ऑटोप्सी करनी है, उसमें वो प्रोब डालोगे, तो अगर ब्लड क्लॉट नहीं हुआ होगा तो आपको प्रोब आराम से अंदर चला जाएगा, बिकॉज ब्लड इज फ्लूइड. बट इफ द फीटस वुड हैव सर्वाइव्ड at least 2 hours after delivery, the stump which is remaining now will have complete clotted appearance of the blood. So आप probe डालना चाहोगे तो you will meet resistance. Okay, what if the fetus would have survived for a day after birth? The cord dries up completely. बाहर से पूरा सूखा हुआ cord मिलेगा. Okay, it is completely dried up cord. In about 2 days, there is inflammatory ring at the attachment of the cord to the umbilicus in the abdomen. So जहाँ पर वो cord attach हो रहा है उसके नीचे जो ring structure है उसको आप देखोगे तो वहाँ पर reddening और inflammation के sign मिलते हैं around 2 days after the successful live delivery. Okay, then if the child would have survived for 3 days, the cord mummifies completely. तो तकरीबन अगर 3 दिन तक लाइव रहा हो आफ्टर डिलीवरी दैट नियोनेट, ओके, तो क्या होगा कि वो जो कॉर्ड है ना
वो कंप्लीटली ममीफाई कर जाएगा, यानी कि उसके तीनों जो वेसल्स हैं वो आपस में मैट कर जाएंगे. सो it will look as a single shriveled structure. Now if you will try to put a probe inside that structure, you will not be able to slip the probe inside any of the vessels because they have matted together completely. So उसके अंदर कोई lumen नहीं मिलेगा आपको. ठीक है. तकरीबन 5 to 6 days post delivery the cord is detaching itself from the umbilicus, and more or less around 6 or 7 days the cord completely falls off. Okay, so when the cord completely falls off, what remain behind is the raw umbilical area. So initially this is a raw umbilical area जिसपे से अभी अभी एक structure का detachment हुआ है. This raw area will now heal, and this raw area heals by the virtue of granulation tissue formation, and this takes about another 6 to 7 days to heal up completely to form what is called as a normal looking umbilicus. So basically umbilical cord ka from the time of successful live delivery to till the time a normal looking umbilicus is formed on the abdomen, it's a cycle of about 15 days, a cycle of 2 weeks to a fortnight. अगर इस पूरे साइकिल में से किसी लेवल तक का भी चेंज हमें दिख रहा हो, इट मीन्स कि उस लेवल तक fetus was alive. So let's say that we find that the cord which is attaching, it has almost separated off, यानी कि तकरीबन 90% वो सेपरेट हो चुकी है cord. It means fetus was alive for about 5 to 6 days. After that, the fetus, I should not say fetus then, the child was subsequently killed by whatever manner. This is how we can have an idea by looking at the healing of the umbilical stump. Now, because lots of these bodies are found when they are already decomposing, then these kind of findings are always not reliable. So हमेशा reliable नहीं होती है umbilical cord की finding, but it's always good to note whatever change we find in the umbilical cord. Fine. And lastly we come to the examination or inspection of the respiratory apparatus, more importantly lungs. Okay, so what exactly do we see in the respiratory apparatus? First of all is that we see the position of the diaphragm. lungs के नीचे हमारा diaphragm होता है, और you know जब live birth होती है and the child or the newborn baby cries, that is when he makes good respiratory effort. वो crying जो होता है ना, वो एक respiratory effort होता है उस बच्चे का. So जब वो अच्छा respiratory effort आता है, his lungs inflate, and when his lungs inflate, they push the diaphragm down because lungs will be filling up the whole pulmonary cavity that's available to them. तो जब इन्फ्लेट होंगे वो पूरी पल्मनरी कैविटी को फिल करेंगे, तो वो डायफ्राम को पुश करेंगे नीचे. ठीक है. एंड द लेवल ऑफ डायफ्रामेटिक डोम चेंजेस. जो डायफ्राम के डोम का लेवल है वो चेंज होगा, वो नीचे जाएगा. तो हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले देखना होता है कि डायफ्राम के डोम का लेवल क्या है. अगर डायफ्राम के डोम का लेवल 4th to 5th इंटरकॉस्टल स्पेस है, इट मीन्स इट्स प्रॉबेबली नॉट अ लाइव बर्थ, बिकॉज ये लेवल होता है उसका बिफोर रेस्पिरेशन. इफ live birth happens and the child has good respiratory effort and has pushed the diaphragm down, the level of diaphragm changes to 6th to 7th intercostal space. So तकरीबन 2 intercostal spaces का फर्क आता है, before live birth, after live birth. Before live birth ऊपर 4th to 5th, after live birth नीचे 6th to 7th. Okay. So what caution we have to take in infantile autopsies is that we need to open the abdomen first. Very, very, very important thing to remember in infantile autopsy. Okay,
क्यों हमें एब्डोमेन पहले खोलना है भाई? हम क्यों थोरैक्स पहले क्यों नहीं खोल सकते, या फिर हम हेड क्यों नहीं पहले खोल सकते? ओके, बट हेड आप पहले खोल भी लो, डजेंट मैटर, बट क्यों हम थोरैक्स पहले नहीं खोल सकते? इज बिकॉज इफ यू ओपन द थोरैक्स फर्स्ट टू टेक द lungs out, the intestinal loop will push the diaphragm up into the empty thoracic cavity and the level of the diaphragm will change. फिर पता नहीं चलेगा कि diaphragmatic level नीचे आया था या नहीं आया था. Okay, so that's one precaution that we need to take, that we need to open the lungs, the abdomen of the infant first to check for the diaphragmatic level. Why? Because in infantile autopsy, the primary objective is not to find the cause of death. The primary objective is to establish whether it is a live birth or not. Okay, to fulfill that primary objective, we need to do this as the first step in autopsies of infant. Open the abdomen first. Remember, lots of MCQs have come from this area. Then once we have checked through the level of diaphragm, then we open the thorax. We do the assessment, first of all the visual assessment, thorax open करने के बाद, whether the lungs are filling the whole available chest cavity or whether they are lying collapsed in the chest cavity and lot of empty space around them is available. क्योंकि अगर वो inflated lungs होंगे, respired lungs होंगे, they would have ballooned off and they would be filling the available chest cavity area. ठीक है? Whatever is the situation, after giving this primary inspection, then we take the lungs out. Okay, we dissect the lungs out from their hilar attachments, and then we inspect and examine the lungs, whether they are respired lungs or they are non-respired lungs, and thus establish whether it looks to be a live birth or it's a case of a dead born fetus. तो वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जो हम lungs के examination में commonly करते हैं? The lungs are viewed for these 5 characters. The first is color. If it's a case of a non-respired lung, the color is dull gray or brown. In cases of respired lung, the color is pink. Why? Because the moment respiration happens, it augments the pulmonary circulation. Pulmonary circulation बढ़ता है, and the moment pulmonary circulation happens, the color of the lung glows pink क्योंकि blood उसमें ज़्यादा आता है. Then second thing is that we need to check for consistency. To check for consistency, हमें length के pieces को काटना पड़ेगा. Okay? और इसके कंट्रोल के लिए हम यूज़ करते हैं लिवर. सो उसी बॉडी में जो फीटस का लिवर है उसको भी हम साथ में लेते हैं. तो लिवर इज द कंट्रोल सैंपल, लंग इज द टेस्ट सैंपल. सो इफ द लंग कट्स जस्ट लाइक लिवर, लिवर की तरह आराम से वो पीसेस में कट रहा है, इट्स अ नॉन रेस्पायर्ड लंग. बिकॉज इफ इट इज अ रेस्पायर्ड लंग, उसके अंदर हवा भरी हुई होगी, तो जब उसे आप काटने की कोशिश करोगे, इट विल रेजिस्ट कटिंग. इट बिहेव्स लाइक अ स्पॉन्ज. स्पॉन्ज देखा है? स्पॉन्ज को कभी हम चाकू से काटते हैं तो आराम से कटता नहीं है, बट अगर आप ब्रेड को काटना चाहोगे चाकू से तो ब्रेड बड़े आराम से कट जाता है. दैट्स द डिफरेंस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन वी चेक फॉर कंसिस्टेंसी. सो इफ इट इज रेजिस्टिंग कटिंग, then it is pointing towards a respired lung. Then third, we look for the borders on the lung. If the borders of the lung are straight, feature of a non-respired lung. But if the borders are rounded off, feature of respired lung. Why? Because as the air is going to go in and the lungs are going to swell off, balloon off, the borders will no longer be straight. Borders में गोलाई आ जाएगी, roundening आ जाएगी. So rounded borders are features of respired lung. Then fourth, we look at the air cells on the surface of the lung. So अगर आप adult lung का भी specimen देखोगे ना pathology में, तो उस lung में if this is the kind of lung specimen that you may see, उसके अगर
फ्रंटल सरफेस को देखोगे, these kind of hexagonal structures that you see on the surface of the lung. Okay, these hexagonal structures on the surface of the lung can be felt. अगर आप उनको फील करोगे तो you feel convexities, वो आपको ऐसे उभार convexed structures दिखते हैं. These are called as air cells. Fetal lung में भी same फंडा होता है. So you need to feel the surface of the lung from the fetus. So if the surface feels flat, it means it's a non-respired lung. Because if it was a respired lung and the air has gotten inside the lung and the lung has ballooned off, the air cells on the surface, they convex out. You can feel the convexities of the air cells. So if you cannot feel the convexities, the surface feels flat, it's non-respired. If you can feel the convexities, it points towards a respired lung. And fifth, and a very important thing that you look for in lung is the weight of the lung. Now this weight of the lung is given by two tests. One is called as the Fodor's test. Fodor's test लंग के वजन को डायरेक्टली मेजर करता है. यानी कि Fodor's test कहता है that in cases of non-respired lung, the weight of the lung is 30 to 40 grams. Okay, simple as that. आप लंग को weigh कर लो एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे रख के, it should give you a weight of 30 to 40 grams if it is non-respired. But if it is a respired lung, which means pulmonary circulation was well established, the weight of blood also comes into this tissue, the increased blood volume, and the weight almost doubles up. So if you can see, what we are trying to say is that after respiration the weight doubles up. Now the lung weighs about 60 to 66 grams. Okay, so we say that the average weight gain by a lung after live birth is 30 to 40 grams. Okay, this is the average weight gain जो होता है 30 to 40 grams की बीच में ही रहता है before death, sorry before live birth, and approximately double हो जाता है. So average weight gain is 30 to 40 grams. Then second test is Plauquet's test. Plauquet's test also says the same thing, but in a very different manner. Plauquet's test क्या कहता है? Plauquet's test says that the weight of unrespired lungs is 1/70th of the total body weight. So whatever is the total body weight of that fetus, the lungs would weigh 1/70th of it. Okay, if it is a non-respired lung. But with good established respiration, if the fetus was born alive, we said that the weight doubles up, weight double हो जाता है. ठीक है ना? तो अगर weight double हो जाएगा तो वो कितना रह जाएगा total body weight का? It doubles up to become 1/35th of the total body weight in cases of respired lung. So what do we see? That Fodor's test and Plauquet's test, both of them say the same thing, that weight of the lungs double up if it is a live birth, but their way of representation are different. Fodor's test direct weight को grams में represent करता है, और Plauquet's test जो है वो body के total body weight के ratio में lungs का weight बताता है. ठीक है? So these are the theoretical aspects कि हम क्या देखते हैं autopsy में. How do we establish whether it's a live born fetus or a dead born fetus? Autopsy in infants, the science and autopsy का वर्ल्ड जो है वो और भी बड़ा है. क्वेश्चंस भी बड़े अच्छे आते हैं यहाँ से. गुड पैथोलॉजिकल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस प्लेस. हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे व्हेन वी विल कम इन आवर स्पेशल एमसीक्यू क्लासेस, जब हम इन्फेंटिसाइड के टॉपिक तक पहुँच जाएंगे. ओके,
तो आज हम इतना ही करेंगे अपने इन्फेंटिसाइड के टॉपिक में. होप यू एंजॉयड दिस टॉपिक. फॉर मोर इंफॉर्मेशन ऑन दिस टॉपिक और व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वी विल फॉलो, आई इनवाइट यू टू कम ओवर ऑन टू दी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. पर अगर अभी आप वहाँ फिलहाल नहीं आ रहे हो, बट देर इज सम क्वेरी इन योर माइंड, यू कैन कनेक्ट मी एट टेलीग्राम ऐप. द लिंक इज livedaily.me/neetpg. ये आपको मालूम है. और अगर आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे आ रहे हो, वहाँ पर फैब्रिकेटेड क्लासेस आपके लिए मौजूद हैं, सो दैट यू कैन स्टार्ट योर ट्रेनिंग एंड कोचिंग टुवर्ड्स क्रैकिंग नीट पीजी 2021. और अगर आपके पास में थोड़ा ज़्यादा टाइम है, you are somewhere around final year right now, you have 2 years with you, then NEET PG 22 benefit उस classes के absolutely critical. live classes अगर आपके बैच में मिस हो गई आपसे, कोई बात नहीं, वो वीडियो आपके लिए रहेगा. you can go back to that video, play back it again. कोई क्वेरी होती है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस आर अवेलेबल. आप जाकर अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो. पोलिंग के एडवांटेजेस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. लाइव पोल्स के एडवांटेज बहुत क्रिटिकल होते हैं. अभी आपने अगर कभी पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप ये देख सकते हो, जब हम MCQ सेशंस करते हैं एंड यू पार्टिसिपेट, इवन इफ यू डू नॉट नो द आंसर, यू शार्पन योर गेसिंग स्किल्स. आपके गेसिंग स्किल शार्प होते हैं. जिस दिन आप एग्जामिनेशन में बैठोगे ना, उस दिन ये क्रिटिकल नहीं होगा कि आपको इन्फॉर्मेशन थी, आपको नॉलेज थी या नहीं थी. क्रिटिकल क्या होगा, वॉट एवर नॉलेज यू हैड, आपने उसको कितने समय में अपने ब्रेन में वर्कअप करके सही आंसर करने के लिए कितना टाइम लगाया. दैट इज व्हाट गेट शार्पन्ड विद यू जब आप लाइव पोल्स में पार्टिसिपेट करते हो. And to train yourself in different subjects again and again, we have test series and analysis. All this can be simply witnessed by you in special classes. So go and watch special classes by plenty of educators there who are dedicated in NEET PG teaching. Because सिर्फ मैं आपको सफल नहीं कर सकता, मेरी पूरी टीम चाहिए आपको. Anatomy, Physiology, Biochemistry, Pathology, Medicine, Pediatrics, Radiology, Radiotherapy. You need all the team members to work for you. They all are available in those special classes, so that once you have chosen them, then you are somebody who is going to be mentored by them towards achieving your goal. और उस choosing के लिए आपको क्या करना है, you need to download the Unacademy Learners app from your App Store or Play Store. You need to install the app in your phones or other handheld device जो आप प्रेफर करते हो. बट अगर आप लैपटॉप प्रेफर करते हो, डेस्कटॉप प्रेफर करते हो, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन सिंपली गो ऑन टू अनअकैडमी साइट, और उस साइट पे जा करके यू कैन क्रिएट योर अकाउंट. दैट्स ऑल. सो इधर यू इंस्टॉल द ऐप और यू क्रिएट योर अकाउंट डायरेक्टली ऑन टू दी Unacademy site. ठीक है. Once you have done either of them, you simply have to go towards what is called as a manage goal section, जहाँ पर सारे गोल्स हैं. IIT JEE आपका गोल है तो आप IIT JEE की साइट पे जाओगे. अगर आपका गोल UPSC है तो आप वहाँ जाओगे. पर आपका गोल NEET PG है तो आप NEET PG पे जाओगे और वहाँ जा कर के प्रेस प्लस and you will get the subscription for plus section. okay, सब्सक्रिप्शन आपको लेनी है 12 महीने या फिर 24 महीने की, बिकॉज ये टाइम पीरियड चाहिए आपको और आपके एजुकेटर को आपको कंप्लीटली प्रिपेयर करने के लिए. नॉट ओनली दैट, these subscription comes at great discounts as compared to monthly or any other subscription. So you are in a benefit of having good discounts at this subscriptions. और ये सब्सक्रिप्शन लेते समय do not forget to use my referral code, which is Dr. Sumit Live, to have added 10% discount on your subscription amount. The subscription amounts after that referral code are available on your screen. पे अप बाय वॉट एवर मीन्स यू वॉन्ट टू पे अप. जो भी आपके लिए सबसे सूटेबल मेथड है,
पार्ट इन पे इन पार्ट्स, डेबिट कार्ड, फुल पेमेंट इन डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स, EMI ऑप्शन, जो भी आपके लिए सबसे सूटेबल है आप उससे पे कीजिए. Once you have paid, you are part of a structured schedule in your batch and ready to go on into the journey of NEET plus preparation. बट अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो चाहते हैं कि आई शुड बी परचेजिंग और बाइंग एवरीथिंग दैट इज नीडेड फॉर माई प्रिपरेशन इन वन गो, ताकि मुझे ना एग्जाम पास आने के टाइम पे कुछ रिवीजन कोर्स ना लेना पड़े, मेरे पास ऐसा ना हो कि हैंड नोट्स की कमी हो, मेरा किसी दिन मन नहीं कर रहा है कि मुझे फ़ोन नहीं उठाना, तो मैं क्या करूँ यार, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ हैंड रिटन नोट्स पढूं, उसमें कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, मुझे एंड टाइम पे याद आएंगे. ऐसी चीज़ें अगर आपको शुरू से चाहिए तो आपके लिए है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. आप प्लस मत लीजिए, देन यू गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, बिकॉज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में अपार्ट फ्रॉम हैविंग द बेनिफिट्स ऑफ द प्लस, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हैज एडेड बेनिफिट्स. प्रेप लैडर का सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री along with आइकॉनिक, वीडियो लेक्चर्स, क्वेश्चन बैंक 2, रैपिड रिवीजन कोर्स, हैंड रिटन नोट्स, एक ही बारी में आपको सब कुछ मिल जाएगा. जो कुछ भी अनअकैडमी पे आपके लिए एज अ रीडिंग और व्यूइंग मटेरियल होगा, उसके लिए आपको कभी कोई और पेमेंट नहीं करनी. दिस सब्सक्रिप्शन डज कम एट अ लिटिल मोर प्रीमियम, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है, but then it's worthwhile for somebody who is wanting to gather all the information and then start his preparation. ऐसा करना चाहते हैं, you can go for that. Use my referral code there also to get 10% discount for yourself. ओके, क्लास में बने रहिएगा. यूट्यूब मेरे को बहुत मज़ा आता है रोज़ शाम को 7 बजे आपके साथ लाइव आकर के. प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में ये चैनल शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, बिकॉज मोर एंड मोर फ्रेंड्स दैट यू हैव ऑन दिस चैनल एंड more of them discussing something with me, more opportunity you have to discuss amongst yourself and your preparation anyhow will be better if you are not alone. So bring your friends along. अपना ग्रुप बढ़ाने के लिए, उनसे सेम लेवल पे इंटरेक्ट करने के लिए, please do call your friends so that you have a group going on while you discuss things with yourselves. Okay, तो याद रखिएगा मेरा जो रेफरल कोड है दैट इज डॉक्टर सुमित. यू कैन शेयर दिस कोड वाइडली एंड वाइल्डली to anyone who wants to buy anything from Unacademy to avail 10% discount. ठीक है, होपफुली आपको आज की क्लास पसंद आई होगी and we will meet tomorrow with yet another new topic. Till then, take care, good night and be safe.